Good morning, sir. So, very good morning to all of you. Am I audible? Good morning, Yes, sir. Morning. So, already I am delayed, so not to waste any more time, let's start the topic. So, whether screen is visible, are you getting the slides? Yes, sir. Okay. So today we'll be discussing kinetics of drug elimination. Till date, we have discussed almost everything in pharmacokinetics. We have at length discussed absorption, distribution, metabolism, and elimination. So now you're having some idea how drugs are absorbed, how they are distributed, what are the different types of metabolic reactions, and how drugs are metabolized, and why drugs are metabolized. And finally, the drug is excreted by different excretory routes. And what are the different factors which play the absorption or distribution or metabolism of any drug or even excretion? We have discussed in brief, and now you are having some idea. So, just a moment, Something is disturbing me. Well, now some aspects has been left in drug elimination, because in drug elimination we had discussed what is drug elimination. Anybody can say what is drug elimination? Anybody can define what is drug elimination? Yes, please. The excretion of the drug out of the body system. So it is excretion. If the drug is not being excreted, can the drug be eliminated? If you are removing by means of excretions, what are the different excretions? Body excretions? So urine, renal sweat ho gaya. IURE excretion. What are the different body Saliva, tears. excretions? At one time, only one. So Yes, Sony. via urine, Yes. So urine is one body excretion. Stool is another. feces. Right, saliva, Yes. and these are the body excretions. So if you are removing the drug, if your body is removing the drug by means of these excretions, the process was known as drug excretion. My question is, what is drug elimination? Is there any difference between drug elimination and drug excretion? So excretion of drug from circulatory system means blood is called elimination. Is on your video and then answer. So excretion of drug from outside the blood inside body. It's called elimination. So how it happens? How it happens? No idea. You all there is some confusion, I think. In few classes back, I had discussed that elimination means any mechanism by which we are removing the drug out of the body. Okay, so it was elimination, and we are eliminating the drug. If the concentration of the drug in the plasma is some concentration, say for example, it is 100 microgram per ml. Elimination is simply removal of the drug from the body. It can be removed by two mechanisms. One, the most simplest mechanism, that you make it to go out of the body. You force it, your body will try to
evacuate it from out of the body. So that process was drug excretion. The drug is being excreted out of the body by means of different body excretions. The second mechanism is drug metabolism. That means the drug is being destroyed, the drug is being changed, the drug is being metabolized. The original form is being changed. If the original form is being changed, that means that drug has been lost. The new metabolite may have been formed. So that is also one type of drug elimination. The drug is being eliminated. Not the parent drug or the metabolite is being eliminated out of the body by means of drug body excretions, but by enzymatic conversion or by enzymatic reactions, these drugs are being changed inside the body. This change or biotransformation is also one mechanism of drug elimination. The original form, if you are say for example your originality is being changed, your skin color, your face, your nose, by plastic surgery everything is being changed, you cannot be recognized. The same thing is happening. In your case you are having your memories and all these things, and in your inbuilt everything is the same, but in case of drugs, even one hydrogen is being removed from any compound, the chemistry of the compound is changed. In fact, the compound is changed. Everything is changed. So I had discussed that there were two mechanisms of drug elimination. First mechanism was biotransformation, and the second was excretion. So clubbing all these things together, because when we are discussing the kinetics of drug elimination, what is the meaning of kinetics of drug elimination? At what speed these drugs are being removed from the body. And the removal is by two mechanisms. It is by biotransformation as well as excretion. So what is the speed of drug removal or drug elimination? At what pace it is being removed? In what time it will be completely eliminated out of the body? Again, I am talking eliminated. Now I won't discuss excretion or metabolism. By whatever mechanism it is being done. So what time, say for example, I have taken any tablet, any drug, and I would like to know that up to what time, if the drug is inducing sleep, if it is hypnotic or sedative, I would like to know up to what time its effect will be there in the body, or its effect will be there in the body only up to that time, up to what time it is there in the body. If the drug is not there in the body, I think we can say that the effect won't be there, because the effect is due to the presence of the drug. So knowing this time, that up to what time the drug is staying in the body, we can correlate a lot of things. We can correlate its action in the body. Accordingly, we can say what is the half-life of the half-life of the drug. Half-life, in physics you have studied that, or in chemistry, that it is the time required to get the concentration of the drug reduced to its half to its original concentration, or the original amount, you can say. So in what time its concentration or its effect will become half. So by the knowledge of pharmacokinetics, by studying pharmacokinetics, what things we can derive? Ultimately, we have to decide the doses also, the doses of the drug. In what doses we have to give the drug, and after what time we should repeat the drug, and up to what time we should give the drug. What should be the dosage schedule? Say for example, that if you visit any doctor, the doctor prescribes you take this medicine for in the morning, evening, and you take it for 7 days. So he is deciding a dosage schedule for 7 days, and he is deciding the initial loading dose as well as the maintenance dose and the dosing interval. At what time, after 8 hours or 12 hours or 48 hours or 24 hours, whatever it may be, he is deciding the dosing interval, that after what interval you should take the second dose.
Now, why we are saying all these things, that for knowing all these things, we have to study the kinetics of drug elimination. Say, for example, once I had taken that drug, the drug was initially present in maximum amount in the body at just after the administration, and after one day the drug is, say for example, 95% eliminated from the body. That means I have to decide that maybe after 24 hours I should repeat the second dose or like that. So for understanding all these things, we had discussed some of the parameters. We had discussed that why drug elimination or the kinetics or mechanisms of drug elimination we were studying. We were studying the kinetics of drug elimination for rationalizing the doses regimen. Why we were doing, so that we can finalize or we can fix the doses regimen, in what dose we should take the drug, right? And for and how we can rationalize, we have, for this we have to understand the movement or the kinetics of the drug in the body, or we have to learn the, excuse me, अभी मैं क्लास में हूँ, एक मिनट बाद बात। So we have to finalize, for finalizing these things, you have to trace back how the drug is being absorbed, where it is being distributed, in up to what level, up to what amount it is being metabolized, and what are the different excretory routes by which it is being excreted, and what is the speed of excretion and overall speed of eliminations. If we are knowing all these things, we can decide we can rationalize the dosage regimen. So for calculation of the dosage regimen, mathematically we'll be requiring certain fundamental pharmacokinetic parameters. So what are the fundamental pharmacokinetic parameters? We have already studied. First was bioavailability. We have to know what fraction of drug is biologically available in the body system. Say for example, once you had taken 500 milligram of the tablet, and the only 350 milligram is being biologically available in the body. So its bioavailability will become 350 divided by 500 milligram into 100%. So there were formulas, that bioavailability formula was AUC, area under curve, by root, area under curve by root, whatever root you had taken, divided by area under curve IV. If the same drug you had taken by intravenous route and the same drug you had taken by any particular route, say for example oral route, so the ratio of multiplied by 100, so in percent, this would have been the bioavailability of the drug. Okay. The second most important parameter we had discussed, that the volume of distribution. If the bioavailability of the drug is, say for example 90%, or in fraction if it is 0.9, and the volume of distribution is 4 liter per kg body weight, that it is if it is 4 liter per kg body weight, or overall it's a good distribution, that means the drug is being distributed to a larger area. So the volume of distribution was important, VD. And next important pharmacokinetic parameter, excuse me, I'll break for 1 minute and then I'll continue.
Okay, we can continue. Whoever can on your videos, please do it, because that increases the impact of the class. It's not something that I'm reading anything, I'm playing anything which is stored in my just because that's a very tough interaction to make. So whoever can try to be present online in live classes, otherwise it's very difficult. The same thing I'm repeating every time, and you guys are very lenient. I don't know why it's there. Well, we were discussing the mechanisms of and the factor important pharmacokinetic parameters. So these two parameters we had already discussed, bioavailability and volume of distribution. So I won't be discussing these things again. The next very important factor is clearance, because you have to design the doses regimen of the drug. You have to decide in what amount you should take this drug. So for doing all these things, you require a lot of information. And the next pharmacokinetic parameter is clearance. So how it is defined clearance? It is what is clearance? Clearance, just by saying the simple meaning of this word clearance, get cleared from this class. Or if there are 31 students right now in the class, and in every 1 minute, one student is leaving the class. So the rate of clearance of this class, I can say that it is 1 student per minute. It is in with respect to time. If I am calculating the rate of clearance of the student from this class, if there are 31, so the total mass right now is 31, and one is leaving every minute out of 31. So 1 student per minute per 31 students, one is leaving. So what is the clearance in terms of the drug from the body? If the drug is there in the body, so it is in fact now if the drug is being eliminated from the body, if the drug A, it is being this drug is available in the body, in the blood, and it is being eliminated from the body. It is leaving. It is being eliminated. So either it is metabolized or it is excreted. Cumulatively, sum total is the clearance. And what is the speed or what is the rate? There must be any rate of any reaction, or there must be any rate of removal of the drug. So that rate, so you are taking the rate of elimination, rate of removal of the drug, right? Whole divided by the plasma concentration. What was the initial plasma concentration? Say, for example, I'm taking this example. If the concentration of the drug, you see in this picture, if the concentration of the drug in blood, in plasma is 10 microgram per ml, right? If this is the concentration of the drug in plasma, and this one is representing the capillary, and these capillaries, from where these drugs are eliminated? These drugs are eliminated by variety of excretory routes. These may be eliminated by either kidneys, maybe metabolized in the liver, maybe removed in the stool, maybe sweat, or so the overall. If you club the overall or in totality, if you sum the rate of removal is sum total of contribution of all the routes. So this one is representing the sum total, how the drug is being eliminated. And the rate of removal by all the routes, clubbed together by all the routes, it is 500 microgram of the drug per minute of time. It is being eliminated or removed from the body, from your plasma, in fact. What will be the rate of clearance? The rate of clearance will be, it will be
this rate of elimination is 500 microgram per minute. This divided by your plasma concentration is 10 microgram per ml. So this microgram gets cancelled. This ml, so it will be 50 ml a minute, niche aa jayega per minute. So the clearance will be 50 ml of blood. What is the meaning of clearance? Say for example, you are having some 5,000 in your body, you are having some 5,000 ml of blood. Okay, so 50 ml of blood, 50 ml of blood out of 5 liter is being made free from the drug per minute of time. So in what time now you can say that your 5,000 ml, so divided by 50, now you can say that in 100 minutes, in this time, the drug will be completely out from the body. So your rate of clearance or your clearance tells you that for that, this was a fictitious figure. For that, you have to know the volume of distribution. In what volume it has been distributed, and the volume of distribution, you have to divide it, then you can get the time of, apart from this, there are some other factors also. Now coming back, what is the rate of, what is clearance? It is the theoretical volume of plasma. Again, I am saying it is the theoretical volume, not the actual volume. It is the theoretical or the apparent volume of blood plasma, from which the drug is completely removed per unit of time. 1 मिनट में 50 ml बिल्कुल फ्री हो जा रहा है. तो कितना मिनट लगेगा पूरे बॉडी का ब्लड प्लाज्मा को फ्री होने में? Now we can decide. So what this clearance says, this clearance tells you about the rate of clearance. This was the rate of elimination. It was not rate of clearance. If you take into account the concentration of the drug in the plasma, and this clearance is a more comprehensive pharmacokinetic parameter, which tells you about the rate of removal of the drug and the rate of clearance. Based on that, clearance of the drug can be made from so many routes. It can be through, now clearance is, it can be renal clearance. We can calculate the clearance of the drug by kidneys. We can calculate the clearance of the drug by GIT and all this. So there is a concept of total body clearance. Total body clearance. So this clearance in fact is total body clearance. Now we can divide this clearance. What is the percentage of clearance alone by the kidneys and GIT? So since we are in the undergraduate syllabus and you are studying kinetics of drug elimination for the first time, we won't go in much detail, otherwise you will be confused. But nowadays we can calculate each and everything. Everything has been calculated, has been derived by a lot of mathematical equations. I won't give you a lot of equations. Simply you have to memorize the formula of certain pharmacokinetic parameters. You have to memorize this one. This one you have to remember, because this will be asked in JRF questions. What is the formula of clearance? What is the formula of bioavailability? What is the formula of volume of distribution? These three pharmacokinetic parameters you must remember. Otherwise, you cannot solve some of the very simple numericals asked in JRF questions. Okay, now once we have seen that how clearance is going on, now based on try to understand, this is very important, otherwise you'll have confusions throughout your life. Well, if you see that I'm making the screen white, now you listen to me and try to understand. There was a drug A, and this drug was eliminated from the body by clearance, by different mechanisms of drug elimination like metabolism and drug excretion.
So metabolism along with excretion, sum to by sum together, the drug is being eliminated. So we can say that this is the elimination, EL. So if we have to solve, we have to get the half-life. What is half-life? Half-life is initial concentration. Say for example is 100 microgram per ml. And after 5 hours, say for example after 5 hours, this initial concentration becomes 50 microgram per ml. So this 5 hours is the half-life. It is known as the T half. Okay. So now there are certain orders of kinetics. You must have studied the breakdown of or exponential kinetics, linear kinetics, non-linear kinetics. So we can design the we can say the kinetics of the. I'm sharing a white screen to understand things properly. Now, if we plot the kinetics of the drug on XY axis, on X axis, I'm plotting the plasma. I'm plotting the time. And on Y axis, I am plotting the concentration of the drug. It is so on Y axis concentration is there, on X axis time is there. And if you are giving the drug by intravenous route, why I am taking intravenous? Because graphically it will be simpler to understand all these things, because absorption is not there, 100% the drug is being made available. And at this particular moment of time, say for example, this time was 0 minute. At this time, you are injecting, you have made 1 10 ml injection of any drug. So this concentration, say for example, just after injection, instantaneously, the drug concentration might have been 100 microgram per ml. So this was 100. What will happen after injection? The drug will move throughout all of the body and parallel. So just after injection, the drug will be the concentration of the drug, this initial concentration of 100 microgram per ml, this concentration will start reducing by mechanism of drug distribution. Parallel, the drug may be metabolized also. The drug may be metabolized also. We are having just less than 1 minute time, so I'm breaking here and you will read. So what I was discussing, that we were discussing the XY axis of XY plot of plasma concentration and the time of drug. And we were taking one example that the drug was given by intravenous route. The drug was injected by at this moment of time, the drug was injected, and the maximum initial concentration that reached in the blood was, say for example, 100 microgram per ml, right? So my question was, in this initial concentration of the drug after the initial injection started to decline, right? And this way it was declining. My question is, why the drug concentration is declining? Who will answer? Why the drug concentration is declining? Yes? Distribute. से distribute हो The drug जाता is है. being distributed throughout the body. So the concentration of the drug in the blood is getting lesser and lesser. Apart from distribution, there are some. So the first this decline, the reason of decline is distribution of the drug.
Apart from distribution, is there any other contributory factor which adds to the decrease in blood concentration? Elimination, sir. So, as I had told, that elimination can be made by two mechanisms. It is by Metabolism. drug metabolism. Excretion and metabolism. Elimination I am writing as EL, okay? And this elimination is either due to metabolism or excretion. I am writing E as excretion. So, sum together of distribution and elimination. So the decline in blood concentration is due to sum together total action of distribution and elimination. So what happens that if you give any drug by intravenous route, the plot of the plasma concentration versus time profile is something like this one. So it is something like this one. So it is not a one directional linear. It shows two curves. If you give any drug by intravenous route, majority of the drugs, they show this pattern, very typical pattern. And the first phase, you can say that this particular phase, it is sharp fall. It is sharp fall because slope of the curve is more. Here the slope is, here the slope of the curve is more. You understand what is the slope of the curve? And how the slope of any linear curve is calculated? You have any idea in chemistry how the slope is calculated in mathematics? Height by base. Yes. Y axis by x axis को divide करके slope tan theta से भी निकालते हैं. It is simple mathematics. You extrapolate it, and one right angle triangle is there. So Yes, this sir. angle decides the slope of the curve. If this angle would have been this one, the angle would have changed. The slope might have been changed. If this angle would have been this one, so this angle would have been lesser, different. So the slope, so it is simply tan theta. You can decide the slope of it. So you have to calculate the slope for the linear. Since it is a linear equation, the line is a straight line. So the calculation for a straight line can be solved. It's very simple, and we can get the rate of decline of the curve. Now, what I'm saying that after a certain time, the slope is getting disturbed. This initial steep fall in blood concentration is getting reduced. The fall, this slope is different. Initially, this was the fall, and thereafter you can say this is the fall. So that this degree is reduced. This is more. If it would have been, say, for example, 75 degree, now it is something like 50 degree or 45 degree, like that. The slope is getting reduced. So why it is getting reduced? Why this second slope has reduced? The initial, anybody can answer why the second slope has reduced? सर सेकंड स्लोप में सर एलिमिनेशन हो रहा है. तो एलिमिनेशन तो इसमें भी हो रहा था, एलिमिनेशन इसमें भी हो रहा था. तो सर इसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, इसमें इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट फॉल का जो स्लोप था, इट वाज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन सम टुगेदर जो इफेक्ट है जिसकी वजह से स्लोप था. तो यहाँ पे कम क्यों हो गया स्लोप? व्हाई? यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. At one time, Preeti will answer. Yes. Yes, Preeti. सर फर्स्ट वाला जो स्लोप है उसमें मेनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट सेकंड वाला जो स्लोप है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन साथ में हो रहा है. No, wrong. This is the फर्स्ट first. फेज में एलिमिनेशन स्लो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एलिमिनेशन मेन है. सेकंड स्लोप The first. This is the first slope. So first slope is due to distribution and elimination both. Here distribution and elimination दोनों मिलके हो रहे हैं. दो लोग किसी काम को करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट से होगा. यहाँ पे after certain time what happens,
डिस्ट्रीब्यूशन इज सैचुरेटेड, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हमारे पास 100 टॉफीज हैं और आपके पास एक भी नहीं है, तो मैं आपको देने लगूंगा, एक समय दोनों के पास 50-50 हो जाएंगे, तो मेरे से फिर फर्दर जाने का स्कोप आपको बंद हो जाएगा, या एक टॉफी मैं दूंगा तो एक आपसे वापस ले लूंगा। इस तरीके से अगर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बैलेंस्ड है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये सेकंड जो फेज है इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज ओनली एलिमिनेशन, इट इज ओनली एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो सेकंड फेज है इसमें सिर्फ एलिमिनेशन है, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये जो एंगल है वो रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंगली दिस XY कर्व जो था जिसमें दो डिफरेंट स्लोप्स थे, फर्स्ट स्लोप वाज द फर्स्ट फेज ऑफ ड्रग एलिमिनेशन वाज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब इसमें फर्स्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो डिक्लाइन इन ब्लड कॉन्सेंट्रेशन वाज मेनली ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन में इसमें डी जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 90%, 85%, 90% डिक्लाइन इन ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। एलिमिनेशन बहुत छोटा था, डिस्ट्रीब्यूशन का अगर प्लॉट बनाया तो डिस्ट्रीब्यूशन का साइज ये था, एलिमिनेशन इतना छोटा था। और सेकंड में तो ये वाला फैक्टर हट ही गया, तो सेकंड में सिर्फ एलिमिनेशन है, तो ये सेकंड में सिर्फ एलिमिनेशन है, तो इसलिए सेकंड फेज को बोलते हैं एलिमिनेशन फेज, फर्स्ट फेज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कायदे से बोलना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन फेज, लेकिन अब जो बड़ा नाम है उसी से नाम लिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज नाम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एलिमिनेशन नहीं होता है। पूछेगा ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज वेदर ड्रग मेटाबॉलिज्म हैपेंस, द आंसर विल बी यस। ठीक है, अब स्लाइड्स पे आते हैं। Now coming back, now if we see the kinetics of drug elimination, there are certain orders of kinetics. First is first order kinetics. What is first order kinetics? In most of the chemical reactions, in most of the biological reactions, the kinetics follows the first order. What is the meaning of this first order? The first order says that the first order says that the rate of drug elimination and eliminate is directly proportional to the concentration. So what is the rate of drug elimination? If the rate of elimination is small e, it is directly proportional to plasma concentration C. First order kinetics says that, say for example, you have taken any drug. Take two examples. The patient has taken a drug A at the dose of, say for example, 500 milligram tablet. The patient has taken a dose of 500 milligram tablet. If I have taken a tablet of 500 milligram and consequently the plasma concentration that is there in the body, if it is 50 microgram per ml, what this first order kinetics says that elimination, this elimination rate of elimination, this is directly proportional to 50 microgram per ml. This is the concentration. जो बाहर एलिमिनेट होने का रेट है ना, वो 50 माइक्रोग्राम पर ml पे डिपेंड करेगा। Now the second example is, if I could have taken this drug in some, say for example, 2000 माइक्रोग्राम, if 2 ग्राम के हमने एक टैबलेट लिया, वो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा बनेगा। मान लो कि ब्लड कॉन्सेंट्रेशन इसमें 150 माइक्रोग्राम बन गया, ठीक है, 150 माइक्रोग्राम पर ml बना। तो यहाँ तो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा हो गया पहले से। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग वाज, पहला केस में 50 था, दूसरा केस में 150 हो गया।
नाउ माय क्वेश्चन इज कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा किस में होगा, पहले में होगा कि दूसरे में होगा? Who will answer? I am again, listen my question very carefully. I am asking rate of elimination. Now what is rate? Rate of elimination, it is amount of drug removed per unit of time. It is rate of elimination per unit of time. कितना remove हो रहा है, कितना concentration remove हो रहा है, क्या तो this rate of elimination it is directly proportional with concentration. अगर concentration ज्यादा होगा तो rate of elimination ज्यादा होगा. अगर आपने ज्यादा टैबलेट डोज ले लिया तो आपके यूरिन में ज्यादा मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा, ज्यादा उस ड्रग एलिमिनेट होगा वहां पे. ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक चपाती खाने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, 10 चपाती खाने में सिंपल 2 गुने 10 कर तो 20 मिनट लगेंगे. अगर ज्यादा खाना है तो उस हिसाब से. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. जो ओवरऑल टाइम ऑफ एलिमिनेशन देखें कि कितना टाइम में वो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से टोटली. अगर 500 मिलीग्राम का टैबलेट लिया, वो अगर 24 घंटे में बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है. 2 ग्राम का टैबलेट भी लेंगे तो वो भी 24 घंटे में ही एलिमिनेट होगा, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगेगा. जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है वो सेम होगा. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये बोलता है, क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा लोगे तो ज्यादा रेट में एलिमिनेट हो रहा है, स्पीड बढ़ा हुआ कम है तो कम है. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अब what this first order kinetics says that rate of elimination is directly proportional to blood concentration. इसका कहने का मतलब है, it means that a constant fraction of drug, अगर आपने ड्रग लिया है 500 मिलीग्राम लिया है टोटल, इसका अगर 10% एवरी यूनिट ऑफ टाइम रिमूव हो रहा है तो 1/एक फ्रैक्शन इज, मान लो कि 1/10 है, तो इसका 1/10 जो है वो एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो ऑलवेज रिमूव हो रहा है. 1/10 हमेशा रिमूव हो रहा है. अब आप 5 ग्राम लो, 5 किलो लो, फ्रैक्शन उतना ही रिमूव होता रहेगा. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आप एक कांस्टेंट फ्रैक्शन रेट ऑफ रिमूवल वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है. तो टाइम हम बता सकते हैं कि जितना टाइम में बॉडी से एलिमिनेट होना है वो फिक्स्ड होगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं. आप कितना भी ड्रग का डोज लो वो उतना ही टाइम में बॉडी से आउट होगा जितना में होना है. उस बेसिस में हम बता सकते हैं कि कितना टाइम में हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है. इसमें टी हाफ जो है वो भी फिक्स्ड होगा. इसमें जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस जो है कांस्टेंट होता है, और इसमें जो है टी हाफ जो है वो भी फिक्स्ड होगा. टी हाफ जो है चेंज नहीं होगा. अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग. इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलेंगे. अब मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, जितने भी ड्रग हम यूज करते हैं, मेजॉरिटी मोर देन 99% ड्रग्स वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. ठीक है. अब मैं पूछूंगा ऐसा क्यों है भाई. अब नाउ क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं, आप भी पार्टिसिपेट करें, ऐसा क्यों हो रहा है? Who will answer? हमने ज्यादा ड्रग लिया, हमने डोज अपने बढ़ा के 4 गुना कर लिया. 500 मिलीग्राम की जगह 2 ग्राम का टैबलेट खा लिया, वो भी 24 घंटे ही काम करेगा. क्या मतलब है? हम ज्यादा अगर लिए हैं डोज तो ज्यादा देर तक बॉडी में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. व्हाई? Who will answer? कुछ लॉजिक लगाइए. अगर आप मैकेनिज्म्स ऑफ एलिमिनेशन समझना चाहते हैं तो इन लॉजिक को आपको पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, डिस्कशन में. आप डिस्कशन में यस प्लीज. बायोअवेलेबिलिटी से क्या होगा फिर? जितना अवेलेबल होगा, मतलब प्लाज्मा या ब्लड, तो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा. तो मैंने तो डोज 4 गुना ज्यादा लिया है तो वहाँ अवेलेबिलिटी भी तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा वहाँ पे ड्रग अवेलेबल है. तो ज्यादा ड्रग लिया है तो ज्यादा देर तक बॉडी में रहना चाहिए, वो भी 24 घंटे में आउट हो जाता है. क्यों सर? हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है. हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है सर. इंडिपेंडेंट होता है. अच्छा ठीक है.
तो उससे क्यों क्या हो जाएगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने सर अपनी डोज तो 5 गुना बढ़ा ली, 4 गुना बढ़ा ली। जैसे होता है ना कि अब भूख अभी निकलना है तो 2 चपाती ब्रेकफास्ट में कर लिया, दिन भर खाने को नहीं मिलेगा, दबा के खा लिया, तो शाम तक भूख नहीं लगेगी, ये तो समझ में आता है कि बढ़ा लिया। यहाँ पे डोज बढ़ा लिया तो 24 घंटे कल फिर लेना पड़ेगा डोज, 24 घंटे बाद रिपीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाएगा। जबकि हम अगर कल मान लो कि ऐसा नहीं है कि कल किसी वजह से हमको दवा खाने का टाइम नहीं मिलेगा, आज ही दबा के बढ़ा के 4 गुना ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। आप आधा टैबलेट खाओ, 1 टैबलेट 10 टैबलेट खाओ, इसका जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है या जितना देर बॉडी में रहना उतना ही देर रहेगा, कितना भी डोज आप ले लो। क्या आंसर है इसका? अब नाम लेके मैं पूछूंगा, आप खुद कुछ हाइपोथेसिस लॉजिक लगाइए अपने से। सर अपीरेंट वॉल्यूम। अरे ठीक है, फॉरगेट दिस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल लॉजिक अपने से लगाओ। मेटाबॉलिज्म में जो टाइम लगेगा सर, मेटाबॉलिज्म में जो टाइम लगेगा दोनों 2 ग्राम, यस प्लीज। हाँ जी सर। हेलो, हाँ बताओ। सर वो जितना टाइम 200 माइक्रोग्राम का लगेगा उतना ही 2 माइक्रोग्राम का भी लगेगा सर। उसके मेटाबॉलिज्म में मतलब दोनों के इक्वल टाइम लगेगा, इसी का आंसर ऐसा होगा। मेरा सवाल है क्यों इक्वल लगेगा यार? हमने सुबह में आज 2 चपाती नाश्ता की तो 2 बजे भूख लग जाएगी। वाइफ ने कहा कि आज तो लंच नहीं दे पाएंगे, 2 और चपाती खा लो, फिर शाम में आके खाना, तो काम चल जाता है, भूख लेट से लगता है। यहाँ ऐसा क्यों है? यहाँ तो दोनों का इक्वल नहीं है, हाफ लाइफ टाइम तो इक्वल ही है ना, क्योंकि का डोज सिर्फ डिफरेंस कर रहे हैं। और कोई बताओ इसका आंसर? मैं कल बताऊंगा, आज पूरा ढूंढेंगे, ठीक है? और नेटवर्क भी थोड़ा वीक हो रहा है अभी, पता नहीं पावर कट हुआ है। इसका आंसर ढूंढेंगे और काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन 1-2 मिनट बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम फाइनलाइज करेंगे। बुक से पढ़ेंगे, आंसर ढूंढ के आएंगे। मैं बाय नेम पूछूंगा, कोई ऐसे नहीं बोलेगा, और सबके वीडियो ऑन करा के पूछूंगा। आप अगर नहीं इन चीजों को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लॉजिक है, बॉडी से कोई भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होता है, यू ट्राई टू सी, विजुअलाइज दोज मैकेनिज्म्स। हमने 5 ग्राम का टैबलेट लिया है या 500 मिलीग्राम का टैबलेट लिया है, उसका ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कैसे हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है आइदर बाय मेटाबॉलिज्म और या बाय एलिमिनेशन, बाय एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म में जो है, मेटाबॉलिज्म किससे होते हैं? वो एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में, उनके थ्रू हो रहे हैं। और एलिमिनेशन जो है डिफरेंट एक्सक्रीटरी रूट्स हैं, यूरिन से, स्टूल से। अब हमने 500 मिलीग्राम का टैबलेट लिया, जैसे हमारे पास गैस का फ्लो सफिशिएंट है, हमें 2 लोगों का चाय बनाना हो या 20 लोगों का चाय बनाना हो, प्रिंसिपल बोलता है टाइम सबके में सेम लगेगा। मतलब जो रूट्स ऑफ एलिमिनेशन है वो अगर सैचुरेट नहीं हुए, कहने का मतलब है कि आप एमएलटी हॉल में क्लास कर रहे हैं, आप एमएलटी हॉल में 500 बच्चे हैं और क्लास खत्म हुआ, निकलना हो, तो अगर एक ही गेट है निकलने का और 1 बाय 1 निकलना है, तब तो टाइम 5 स्टूडेंट में लगेगा, 5 सेकंड लगता है, तो 500 स्टूडेंट में 500 सेकंड लगेगा। लेकिन उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ गेट्स हैं कि निकलने में कोई रश नहीं है। तो एक स्टूडेंट को, 5 स्टूडेंट को जितना टाइम निकलने में टाइम लगेगा, 500 को वो सेम ही लगेगा, क्योंकि गेट तो सैचुरेट नहीं हुआ है, वो इस गेट नहीं, उधर से निकल जाएगा, जो जहां जिसको मौका लगेगा निकलेगा। So when you are increasing the dose, you are increasing the blood concentration. But you cannot say that routes of elimination are saturated. They are not saturated. Kidneys nephron से जो filtration rate है, आप 10 माइक्रोग्राम पर ml का अगर लोड है, वो भी सेम स्पीड से फिल्टर होगा अल्ट्राफिल्ट्रेट में। आप अगर 500 माइक्रोग्राम पर ml का लोड है, वो भी फिल्टर होगा, तो फिल्ट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड। अगर वो रूट ऑफ एलिमिनेशन सैचुरेट हो गया होता, देन ये जो है फर्स्ट लीनियर काइनेटिक्स चेंज हो जाता। सर, हाँ बताइए। यस प्लीज। सर, बट देयर आर केसेस ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स आल्सो ना,
तो उस केस में ठीक है, कैसे होता है? ओवरडोज मतलब आप क्या समझती हैं? व्हाट डू यू मीन तो बाय जितना ओवरडोज? अमाउंट नहीं, रिक्वायर्ड है, अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं ओवरडोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन ओवरडोज नहीं है, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसका जो रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट होना चाहिए, उसका जो टॉक्सिसिटी है, आई कैन अफोर्ड द टॉक्सिसिटी ऑफ एनी ड्रग ओनली अप टू सर्टेन लेवल। जैसे पैरास्टामोल टैबलेट है, 500 मिलीग्राम का टैबलेट है पैरास्टामोल, ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो लिवर टॉक्सिक है, लिवर को डैमेज करता है बच्चों में। इसीलिए पैरास्टामोल जो साइरप है, डॉक्टर बोलता है जितना डोज मैंने बोला उतना ही देना, ये नहीं कि 1 चम्मच की जगह 5 चम्मच दे देना, तो उसका लिवर डैमेज करेगा। तो एक सर्टेन डोज ही हम उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टॉक्सिसिटी। ऐसा नहीं उसका 10 गुना ज्यादा देगा तो बॉडी से नहीं निकलेगा। हम अभी एलिमिनेशन, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, अभी नहीं पढ़ा है उसको। तो डोज ओवरडोज जो है वो कॉन्सेप्ट है, वो फार्माकोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ज्यादा डोज से ज्यादा असर होगा, क्या होगा, वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एलिमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं कि एमएलटी हॉल में अगर 500 बच्चे हैं और एमएलटी का मेन गेट ही खुला हुआ है, तो सबको निकालने में उतना टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन उसके अगर सारे गेट्स ऑल डायरेक्शंस में और 5 और गेट बना दिए जाते हैं, तो निकलने में वही टाइम लगेगा जो 10 बच्चे को निकालने में टाइम लगेगा। अगर रूट्स ऑफ एलिमिनेशन सैचुरेट नहीं हुए हैं तो टाइम ऑफ एलिमिनेशन सेम ही होगा, डोज किसी डोज में दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल है कि बॉडी में जितने ड्रग्स हैं सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, बट कुछ एक ड्रग्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं फॉलो करते हैं, दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स आप थोड़ा पढ़ के आएंगे कल के क्लास में, जो काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन सेकंड पार्ट है, हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग कंक्लूड करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैं आपको गूगल फॉर्म के थ्रू उसका मैं लिंक भेजूंगा, जो इसका इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप पे डालूंगा। और उस टेस्ट के बाद फिर हम लोग, मैं मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर छठ फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन क्लासेस होंगे आपके, लेकिन फार्माकोडायनामिक्स जो हम स्टार्ट करेंगे छठ के बाद करेंगे। बीच में कुछ रिवीजन लेक्चर्स वो सारे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में डालिए, आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ओके।